Good evening, students. Today I'm supposed to teach you the MOS capacitor. So MOS capacitor is a subpart of your this MOSFET. MOSFET is your one of most popular transistor nowadays. MOSFET stands for more metal oxide semiconductor field effect transistor. This metal oxide and semiconductor, it means we are supposed to use these three kinds of material in our this structure. FET, field effect transistor, it means in this type of structure field means electric field plays a very important role in this type of transistor. Okay, field effect. So this MOSFET itself says a lot about this structure. So nowadays we use this kind of transistors. Earlier BJT was used in the all chips, but because of few drawbacks, nowadays these kind of transistors are used in manufacturing of microprocessor or in your other kind of chips. So to understand this, first of all, MOSFET is, what is this MOSFET? MOSFET is made up of MOS, metal oxide semiconductor capacitor plus two more PN junctions. One is your source to substrate junction and second one is your drain to substrate junction. We will study this later. So what is this your MOS capacitor? We all know that capacitor have two metal plates separated by a dielectric. We can take any kind of dielectric. Here in this case dielectric is your air, but in this structure MOS we use SiO2 insulator as our dielectric. We can change our dielectric according to our requirement depending upon the dielectric constant and all. Basically आपका जो dielectric जो हम ये यहाँ पे ऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसकी थिकनेस होती है 1.5 नैनोमीटर, अराउंड 1.5 नैनोमीटर. नैनोमीटर इज नथिंग बट इक्वल्स टू 10 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ size of one molecule is equals to 1 angstrom. So we can say this oxide is consist few oxide molecules. So this structure is very small and scientists are further trying to reduce these structures so that the speed will increase. There are few parameters that are related to the size of our devices which results in few pros and few cons. So depending upon our requirement we can change these parameters. Like earlier people use aluminium as gate, aluminium material use करते थे, but nowadays polycrystalline silicon is used because of its few properties, like it can withstand high temperature without reacting with SiO2. aluminium का temperature कम होता है. आपने देखा होगा बेकिंग में या कहीं भी हम मैक्सिमम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का वायर यूज़ करते हैं. बट जैसे जैसे आपका डिवाइस का साइज रिड्यूस होगा योर टेम्परेचर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. लाइक डिवाइस भी हीट हो जाता है ना, तो वो क्या है, अगर आपका जो मटेरियल यूज़ किया है उसका टॉलरेंस टेम्परेचर कम हुआ तो आपका डिवाइस क्या है, डैमेज हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए आजकल क्या है, एट द प्लेस ऑफ दिस एल्यूमिनियम मेटल
वी यूज पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन। पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन कुछ नहीं होता है, जो आपका पी और एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है वो हाईली डोप्ड, अगर आपका कोई सेमीकंडक्टर है वो हाईली डोप्ड है, लाइक एन प्लस प्लस। एन प्लस प्लस मीन्स आपका जो ये आपका ईसी है, ये ईवी है, एनर्जी बैंड डायग्राम। आई होप यू गाइज नो व्हाट इज द एनर्जी बैंड डायग्राम। सो इसमें आपका क्या है, EF लाइज इन अबव द EC। इट मीन्स आपकी क्या है, ये जो स्टेट्स हैं ऊपर वाली वो सारी क्या है, इलेक्ट्रॉन से फील्ड है। यहाँ पे और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है आपका ईवी बैंड में। ये हाईली डोप्ड जो सेमीकंडक्टर होता है उसको हम बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। in my next video I'll explain the energy band diagram of this structure. So I hope so this is your prerequisite knowledge. You must know what is the energy band diagram of a silicon or of a semiconductor, because to understand the chemistry of any device or any structure in electronics, you must know the basics of energy band diagram. With the help of energy band diagram, it is very easy, it becomes very easy for us to understand this structure. Okay, that's all for today.